Hello, students. I'm sure you would be waiting for this moment since long. To begin my presentation, I'll start with few lyrics of a very beautiful song that is माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे Dangal. And Dangal has already begun in this jungle of studies. तो आप लोगों ने ज़बरदस्त एफर्ट किया है, तैयारी की है, यूसेफ एग्ज़ाम हो गया है एंड आई एम श्योर you are preparing very well for your board exams. So let's start with the presentation of the most anticipated time of USEP, that is the results, various observations, analysis, and our farewell party. USEP, You Will Commerce Exam Practice, is a mega event planned by UWIL classes for the benefit of students. The purpose is to take out complete board exam fear from the students. So in this presentation, you watch out for important guidelines, important tips, important analysis and observation what we have made while we have gone through this process of USEP. USEP was a very big event of UWIL classes. From 12 centers across Vadodara, students of 12th standard commerce gave USEP. Now, it took a team of 60 people to manage the complete examination process, right from making the Google form till your final test and analysis. Managing the centers, organizing papers, checking the papers, solutions, communication to students. So more than 60 people from Team UWIL were assigned with this task of USEP. Students were very enthusiastic in giving exam and wrote the exams very nicely. Now, this is the best part of USEP, the way it is designed. When students come to the center, they come with that same type of board environment and they take it so seriously that they get lots of experience in writing the exams. When I went for supervision, so I saw the students and it was really hard to believe क्या ये सही में मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी अच्छी तरह एग्जाम लिख रहे हैं. एंड the best part was the seating arrangement what we made, which made the students very comfortable and they gave the exam very nicely and sincerely. This is our third event of USEP. We started in the year 2022 and अब तक कोई भी ऐसा मिसअप्रोप्रिएशन कॉपिंग का केस सामने आया नहीं है. We have been rigorously checking the students. We have been very vigilant. 2 supervisors in a class, squad moving around. So it was a great experience for us also to see our students write the papers so nicely. We checked more than 3,000 papers in such a short time. It was a really difficult task, and dear students and parents, thanks for keeping so much patience. आपने इतना patience रखा. I know since last 3 days my phone was constantly ringing and there were so many messages asking ke sir when will the results come, and this shows the enthusiasm of the students and parents for USEP. Your results will be sent in your email as mentioned at the time of registration. So within 2 days you will get the email of results in your inbox. Don't be so hurried कि सर मेल नहीं आया. Mail आ जाएगा because Google has its own process, limitation of processing emails per day.
So within 2 days or maximum 2 to 3 days, you will get the report card in your inbox. But you cannot wait till the mail arrives. So the result of USEP will be sent to each one of you through WhatsApp. We have a WhatsApp community and we'll share the results of all the students. Now, students, this time we have done a great thing for you, a super initiative which so far no other coaching class has done, neither it is done by board. That is, we will send you section wise marks in your report card. So where you have made mistake, where you need to focus, you will be in a better position to analyze it. So super initiative from team you will, and I'm sure it will help you a lot. So after this presentation is over, you will get the report card and check with your exam seat number. Okay? These are the few photographs of USEP. You can see the preparation part, everything getting ready, different boxes, envelopes, ensuring that no paper gets leaked because now it's a criminal liability. Now, students waiting to enter the examination center, and this is the examination center pics. You can see that we also made the students very comfortable in the exam. We were serving them with water, we were ensuring that they write the papers without any stress and they comfortably have this experience of giving USEP. This is the complete team with the students in front of the center. Why I'm showing you all these pictures are so that you students and parents can see the magnitude of this event USEP. That's why we call it a mega event of UL. Especially, I would like to thank Vicky sir, who is a COO and CTO of USEP. COO is Chief Operating Officer and Chief Technical Officer. He has designed all the Google Forms, results, everything, and he has been playing a leading role in managing the complete USEP. I would also like to thank the entire team of teachers, supervisors, and invigilators. Definitely, students, you also deserve a thanks. Now, we will go to that part of presentation where you need to be very attentive and be very careful while you are listening to the remaining presentation. That is analysis and observation of expert faculties and paper checkers. Now, we are starting with the most important subject, that is accounts. Not only accounts is important in commerce from the point of view of its relevance in commerce, but accounts का पेपर इसके लिए भी important है. It is important also because it is the first paper of the board exam. And as I told you before also, first paper is like facing the first ball. पहली बार बहुत सारा नर्वसनेस रहता है और बोर्ड एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है, तो आपको अकाउंट्स के पेपर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. Now, accounts paper will be a bit lengthy and the first paper, so keep speed from beginning. पहले से ही आपको स्पीड रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है. For questions regarding journal entry, accounting treatment, make entry format. We have observed that students just write the entry
Many times they don't draw the format. Many times they don't write the narration. They don't write the heading. Hello, hello. You have to write a journal entry, so it has to be proper. Heading, date, particulars, debit rupees, credit rupees, LF. Also, narrations. Many students forget writing narrations. Now, in the chapter issue of shares, wherever the sum comes, and if in your board exam it is not mentioned that you don't have to write narrations, then you have to write narration. But if it is given that you don't write narration, then it is fine. But for small sums where adjustment entries are asked, you have to do it systematically to get the full marks. Many students have made mistakes while calculating average profit. Now these are our observations, okay, that while calculating average profit in the super profit method of goodwill sum, dear student, in the exam it was asked weighted average, but students did simple average. So dear students, once again I tell you, it is a general observation that students during exam don't read the question carefully. If you do not read the question carefully, high chances you will make silly mistakes. It's a mistake, but you will call it silly because you know the correct thing, but because you did not read the question carefully, you made a mistake. So please be extra careful. Students have made mistake in final accounts, calls in arrears. Now, dear student, in final accounts when calls in arrears is given, it is to be deducted from share capital. And many students have made a mistake in this. They have shown it as a part of your current asset. No, 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 no. It is to be deducted from share capital. So please be careful about all these points. Further, be careful while doing comparative and common size statement. Many students have made calculation mistakes. So please be careful. I would suggest कि do few sums of comparative and common size statement again as practice. Practice every sum of issue of share. In that you practice more the share forfeiture entries. Now basic entries you all know, you are not going to make mistake, but many students are making mistake in share forfeiture entries. So share forfeiture, share reissue and capital reserve. So students, what I would suggest is for every sum of textbook you pick up the part of forfeiture, write the entry of forfeiture, reissue and capital reserve. This way you will be able to cover the chapter faster. For section E, where you have to attempt 3 questions, admission, you will have 2 sums of admission, hopefully, because it's a board exam. We don't know how much we can rely on Gujarat Education Board. Now, 2 sums of admission, 1 sum of retirement and 2 sums of issue of shares. Out of 5, you have to do 3. Now, I talked to few students and they said ki sir, we will do 2 sums of admission and 1 sum of retirement. Fine, that's not a problem. You may leave issue of shares. But dear students, if you do 3 sums which are totally format based, where you have to make revaluation account, partners capital account, cash or bank account, balance sheet, it will be more time consuming. So my recommendation is you do 2 sums, that is either 2 admission or 1 admission, 1 retirement and 1 sum of issue of shares. And that is why in the previous point I told you that you please practice share forfeiture part. इससे क्या होगा? You will be able to save time. Accounts is going to be a lengthy paper, format based sums are there
and you will have final accounts of partnership which is going to be very lengthy. So just try this out. In case you have any difficulty, you can contact us, we'll help you out. Our video lectures are also there. You can watch them as a part of rapid revision. Now, for section F, in case your final account does not tally, सर क्लास में तो हमारा सम टैली हो ही जाता है, टैली हो गया, बट एग्जाम में ही टैली नहीं हुआ. नाउ इसके बहुत सारे रीजन है एंड आई एम श्योर विथ प्रैक्टिस you would have overcome that or you will overcome by the time the board exam comes. Now सब कुछ करने के बाद भी मान लो टैली नहीं हुआ, so don't panic. Finish company final accounts first and then if time permits recheck the calculations. तो आपका फाइनल अकाउंट्स का सम ट्रेडिंग, पीएनएल ऐप, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब कुछ क्लोज करते गए और बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो पैनिक नहीं करना है, आप आगे बढ़ो, कंपनी फाइनल अकाउंट्स खत्म करो. उसके बाद मान लो बहुत टाइम नहीं है तो मैंने मेरे प्रीवियस यूसेफ वीडियो में कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये एक रिस्क है एंड आई डोंट रिकमेंड इट बट इट इज़ अ फायर फाइटिंग सिचुएशन. तो ट्राई कर सकते हो, अगर किस्मत अच्छी है तो बच जाओगे. दैट इज असेट साइड का जो टोटल है वो ही लायबिलिटी साइड लिख देना. बट डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज द लास्ट रिकोर्स, यानी अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ही इसको यूज करना है, बिकॉज टीचर्स हु आर चेकिंग मेनी टाइम्स दे चेक इंडिविजुअल अमाउंट. तो प्लीज़ ये सब ध्यान रखना एंड अकाउंट्स का पेपर अच्छी तरह आप लिख पाओगे. जो जनरल डायरेक्शंस है दैट आई विल टेल यू आफ्टर वी फिनिश ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. नाउ स्टैटिस्टिक्स. Statistics again number based subject. Now in statistics what observation we did was that students were not able to write the proper formula or they were not able to recall. Many times they were not applying relevant formulas. Question क्या है और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं. क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल का और आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला लगा रहे हो. सो आपको प्लीज ये सब ध्यान रखना है. नाउ बी स्लो इन स्टैटिस्टिक्स. इन अकाउंट्स आई टोल्ड यू बी फास्ट, भागो 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 भागो, बिकॉज अकाउंट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी पेपर. बट स्टैटिस्टिक्स यू बी स्लो. नाउ क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज स्टूडेंट्स से कि सर 2 hour 15 minutes पेपर खत्म, 2 hour 30 minutes पेपर खत्म. तो खत्म करके आपको जल्दी एग्जाम सेंटर से बाहर जाने मिलेगा नहीं. तो व्हाट्स द हरी? तुम्हारे लिए जो बाहर इंतजार कर रहा है उसको इंतजार करना ही पड़ेगा. तो स्टैट्स में आई वुड सजेस्ट यू गो स्लो, बी रैशनल, डू प्रॉपर प्रेजेंटेशन. बट सर व्हाट इज प्रॉपर प्रेजेंटेशन? ये तो हमको पता ही नहीं है. प्रॉपर प्रेजेंटेशन इज द प्रेजेंटेशन गिवन इन द इलस्ट्रेशन सम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो लास्ट मिनट रिविजन में प्लीज वो प्रेजेंटेशन देखिए और माइंड में वो प्रेजेंटेशन सेट कीजिए और वैसा ही प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करना है. ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, आपको कोई क्वेश्चंस है, क्वेरी है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बिलो. वी विल इमीडिएटली रिप्लाई इट टू यू. कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट. और कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप यूसेफ का एक्सपीरियंस तो प्लीज कमेंट में शेयर करें. Many students
did not write the formula. हमारे जो चेकर्स टीम थे, जो फैकल्टीज थे जिन्होंने चेक किया, मैंने भी काफ़ी पेपर्स देखे हैं, students don't write the formula, they directly write numbers in the formula and solve it. I'll give you an example of this because आजकल सब कुछ example से समझाना पड़ता है. For example, it's a sum of correlation. Now you know the columns, so you made the columns x square, y square, xy. You did the totals. And then r is equal to, you don't write the formula, n sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x the whole square under root n sigma y square minus sigma y the whole square. Instead of writing this, you directly write the numbers, get the answer. You won't get full marks. Formula is not written. So students, please be careful about this. You can watch this video again and write the points if you right now are not in a position to write important things. तो लिख लो कहाँ कहाँ पे फोकस करना है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो एंड देन राइट वंस. तुमने सुना, तुमने देखा, तुम भूल जाओगे. तो तुम ये लिख लो कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ मिल रही है इस ऑब्जर्वेशन से. नाउ स्टूडेंट्स, those who are scoring less than 70 marks have lost maximum marks in section A and section B. So section A multiple choice question and section B answer in one line or one sentence. Now over here students have lost marks, and dear students, section A and section B is 30 marks. 30 marks. So very important, start focusing on it. Many times students practice lots of full-fledged sums, 4 mark sums, 5 mark sums, 3 mark sums. But you also need to focus on theory. You also need to practice multiple choice question. You also need to write and prepare one-liner. If you are still not able to get कि क्या करना है, watch my previous video that how you should plan your statistics paper. It will help you. Now economics and OCM are theory subjects, and the general observation over here was that students don't highlight the keywords. Now dear students, highlighting the keywords the way I am highlighting over here, okay, that word comes to the notice of the examiner. वो word examiner को तुरंत दिखेगा, और वो word अगर connect हो गया तो teacher will give you full marks for that. So highlight the keywords and points in the answer. फेकम फेकी मत करो, कुछ भी अनशन स्टूपिड थिंग्स मत लिखो. प्लीज डोंट ब्लफ इन पेपर, डोंट राइट इररेलेवेंट आंसर्स. तुम ऐसा मत समझना कि जो टीचर्स चेक कर रहे हैं वो ब्लाइंडली चेक कर रहे हैं आंख बंद करके. नहीं है भाई, तुम्हारी ऐसी किस्मत नहीं है. तुम ऐसा ही मान के चलो कि तुम्हारा जो टीचर होगा वो पेपर, सबसे पहला पेपर बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा ही चेक करने वाले हैं. और कोई भी टीचर जब पहली बार कोई पेपर चेक करता है तो पहला पेपर तो बहुत ध्यान से करता है. सो ये फेकम फेकी इररिलेवेंट आंसर्स मत लिखना. इट विल स्पॉइल योर इमेज. Avoid putting too much spaces in the sentences. अब USEP में UWIL was giving supplementary, board में board will be giving supplementaries. तो ऐसा मत सोचना कि चलो फ्री में है तो कैसे भी करके ज़्यादा सप्लीमेंट्री भरे. सप्लीमेंट्री का वजन देख के मार्क्स मिलेगा नहीं भाई, नहीं. वो रद्दी में ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा पेपर्स उतना वजन ज़्यादा, पैसे ज़्यादा. यहाँ पे इट्स द क्वालिटी. यस, यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव
लेंदी आंसर्स बट क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेंटेंस में स्पेसिंग बहुत रखते हैं वर्ड्स के बीच में. अब टीचर को चेक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स. अब जो टीचर पेपर चेक कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए प्लीज. और ये सब चीजों का खास आपको ध्यान रखना है. एक्सप्लेन points in detail with a suitable example while writing long questions, and don't forget to conclude the topic at the end of the answer. General observation for theory papers is also that you need to use proper handwriting. You have to write properly, neatly, systematically to get very good marks. Now, what things you need to take care? What are the general things which you need to take care before your board exam? First 15 minutes most important because you get the paper in front of you. Please read the questions properly. Start framing and making strategies in your mind. Start planning how you will be approaching the paper. So first 15 minutes very important. Write proper headings, section and question number. Many students had not done this properly. सेक्शन बराबर हाईलाइट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर बराबर नहीं लिखा तो नहीं चलेगा. यू हैव टू डू दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Read the question carefully and write relevant answers. Already we have discussed this कि कुछ भी अनशन बकवास मत लिखना, फिल्मी कहानी मत लिखना. हो सकता है पास में ऐसा किया हो, चल गया, पर बोर्ड एग्जाम में कोई रिस्क मत लेना प्लीज. हो सकता है कि कुछ भी गलत लिख दिया और कुछ टीचर्स के ध्यान में आया और आपका रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया. सो I would suggest please write relevant answers only. Now, write proper answer in detail and point wise for theory questions. Write textbook language. I know dear students डिफिकल्ट होता है कितनी बार सेम वर्ड टू वर्ड रट्टोफाई करना, गोखना, बट हो सके उतना आप टेक्स्ट बुक लैंग्वेज यूज किए, स्पेशली इंपॉर्टेंट की वर्ड्स. ओके, सो फोकस करना कि मैक्सिमम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिखना है. तो मैक्सिमम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिखा है, थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में लिखा है. अगर इंग्लिश अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस प्रॉपरली, देन आई वुड सजेस्ट यू राइट लर्न द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन रेप्लिकेट द सेम इन योर बोर्ड एग्जाम्स. MCQ, most important multiple choice question, 20 question, 20 marks, no options. So 20 में से 20 आपको अटेम्प्ट करना है. बट व्हेन आई सेड नो ऑप्शन यानी हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है. अगर आपने सही तैयारी नहीं किया तो आप गलत MCQ को टिक कर देंगे और हो जाएगा प्रॉब्लम. इवन वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज देयर इन द कंप्यूटर पेपर वेयर the teacher has specifically told me that कि students अगर मार्क करने में गलती हो गया तो वाइटिंग यूज करते हैं. अरे कहाँ से आया ये कंसेप्ट वाइटिंग का ऑन OMR शीट? प्लीज ये सब मत करना, क्रिएटिव मत होना. ओके, यू विल लूज मार्क्स. तो MCQs जहाँ पे भी है, लर्न प्रॉपरली एंड गिव द करेक्ट रिप्लाई. लूजिंग अ मार्क इन MCQ इज अ क्राइम. बहुत बड़ा गुनाह है बिकॉज 4 ऑप्शंस भी है फिर भी आप गलत लिख रहे हो. तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो. आई नो इट इज डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी, बट वी
have to have 20 on 20. One liners, section B, very challenging. Many students have lost marks in section B. When we'll give you the analysis, you can see it for yourself. Now यहाँ पे आपको प्रॉपरली तैयारी करके जाना है, बिकॉज देयर विल बी लॉट्स ऑफ थियरी क्वेश्चंस फॉर अकाउंट्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स. For all papers, keep a watch on your desk. Now, as I told you before, smart watches like this are not allowed. तो स्मार्ट वॉच अलाउड ही नहीं है. तो जो आपका एनालॉग या रेगुलर वॉच है उसको आप निकाल के पेपर के सामने डेस्क पे रखना एंड कीप अ वॉच. तुरंत नज़र उस पर रेगुलरली जाना ही चाहिए सो दैट यू कैन प्रॉपरली राइट द पेपर. Please, 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 once again I am telling you students, suno, don't change the order of section. Please, आप क्यों सेक्शन F से चालू करना चाह रहे हैं? I fail to understand. क्यों रैंडमली कोई भी सेक्शन से पेपर चालू करते हो? क्यों? टीचर को फ्रस्ट्रेट मत करो. जो चेकर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपके मार्क्स जा सकते हैं कि इमेज पड़ जाता है. आपका चेहरा नहीं पता उनको, आपको पता नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो. वो आपको जज करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन इन द पेपर. और पहला ही इंप्रेशन कि तुम रैंडमली कोई भी सेक्शन से चालू करते हो, सेक्शन F से चालू करते हो, प्लीज इट विल बी नॉट अ राइट प्रैक्टिस फॉर यू. अभी भी अगर तुम रैंडमली कर रहे हो चालू तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. सेक्शन ABCDEF ही होना चाहिए. कुछ नहीं आता है तो छोड़ दो जगह, बट ऑर्डर चेंज करना नहीं है. स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस. ऑलवेज कैरी 2 कैलकुलेटर्स, बिकॉज एक कैलकुलेटर अगर बिगड़ गया, गिर गया, टूट गया तो यू हैव अ स्पेयर कैलकुलेटर. देन यू डोंट हैव टू बेग बोरो. ओके, एंड एग्जाम टाइम में वो सब स्ट्रेस देता है, तो पहले से गो प्रिपेयर्ड. बिफोर लीविंग होम, check all essentials. At every center, we found 1 or 2 students in every exam coming and saying, सर हॉल टिकट घर पे भूल गए. फोटो चलेगा भाई, बोर्ड में चलेगा? क्या होगा फिर? पैनिक सिचुएशन. यू विल हैव टू रश होम, और फ्रॉम योर होम समवन हैज टू कम and get the hall ticket. So before you leave the home, be in a good frame of mind. Proper prayer करो, parents का blessing लो, and before you sit on the vehicle, check कर लो कि सब कुछ है कि नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया. Now, very important instruction to you, the final one, that is before or after the exam, don't discuss the question paper. Now, before exam, I have seen students discussing concepts. Students studying, यानी एग्जाम सेंटर के बाहर पे बैठ के कोई पढ़ाई कर रहा है. कम ऑन, पूरे साल क्या किया आपने? ये वक्त नहीं है पढ़ाई करने का, ये वक्त है अपने आप को संभालने का, मेंटली रेडी होने का. बोर्ड एग्जाम से पहले आप कोई भी फ्रेंड से कुछ भी पढ़ाई रिलेटेड डिस्कस नहीं करेंगे. आप मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक शायद बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डज नॉट मैटर. यू गो टू योर सेंटर, classroom, sit on the bench and try to get used to that environment. Now, once the exam is over, please, exam khatam, it is a history. Forget it. Don't discuss the answers, don't discuss the question paper, leave the center, get ready for the next one. Once your 7 papers are over, you can discuss the question paper, you can check, you can calculate the marks what you expect, but ये 7 days के ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी के भी साथ डिस्कस नहीं करना है. हमें भी डिस्टर्ब मत करना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप हमको बताओ.
हम नहीं बताएंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका पूरा फोकस नेक्स्ट पेपर पे होना चाहिए. वंस एवरीथिंग इज ओवर, यू कम टू अस, वी विल सॉल्व द पेपर. ओके. नाउ the most important part of this presentation, that is USEP results for USEP 2024. So for this academic year, what are the results? आपके इंडिविजुअल रिजल्ट्स तो आपको आ जाएंगे मेल से, पूरा रिजल्ट आ जाएगा व्हाट्सएप पे वंस द प्रेजेंटेशन इज ओवर. बट जो रैंकर्स है उसको आज हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे, और रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर अवर फेयरवेल. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज बने रहे. और आप कमेंट्स पे यूसेफ का एक्सपीरियंस लिखिए. तो आप किसी को स्पेशली थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप लिखिए. ये अपॉर्चुनिटी है आप स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो सोच रहे हैं फॉर योर फैकल्टीज, यू वांट टू थैंक देम, यू वांट टू प्रेज देम, you want to praise the system, you want to say something. So this is the time. You have any query, you have any doubt, you have any question, please write in the comment below. Now, result, the word also gives lots of stress. Don't take stress. It's an exam. You gave the exam and you got some marks, which are some numbers. So we would say, you don't see the marks, see the mistakes and ensure not to make it again. This is just a beginning. कोई भी एग्जाम, ये तो एकेडमिक एग्जाम है, बट इन आवर लाइफ ऑल्सो एवरी मोमेंट वी फेस सम और द अदर एग्जाम. Someone would come and test us. Now, we may meet expectation of others, we may not. We may meet our expectation, we may not. So don't need to worry. We all make mistakes. We all learn from our mistakes. But if you are making a mistake, you have to promise me and promise yourself that you will not make this mistake again in your life. ये गलती दोबारा होगा नहीं. It's just a beginning, it's a learning, it's an experience. That is how we all grow professionally and personally. Now, the winners of USEP, I'll start with winner number 3. I'm sure काफ़ी students को धक 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 हो रहा होगा. Okay, here comes winner number 3. Santosh Vinod Patil from Subhanpura. He has scored the 3rd rank. You can see his marks. Accounts 97, Eco 90.5, Stats 99.5, OC 92.5, Hindi Gujarati 86, English 81.5, Computer 87, and total 90.57. So big congratulations to Santosh from our Subhanpura branch. All of you students, please congratulate him. Now comes winner number 2. The second winner for USEP 2024 is Mansi Amit Fadia from Pratapnagar branch. Big congratulations, Mansi. You have scored very nice. Accounts 98.5, Eco 88, Stats 99.5, OC 92, Language 92, English 83.5, Computer 82, and overall 90.79. Now, dear students, before I announce the winner number 1, those students who are scoring 99.5, you are scoring 99.5. Actually, everything is correct in your paper. But then, why have we deducted your marks? You would be wondering, कि सर सब आंसर सही है तो मार्क्स क्यों डिडक्ट किए? Because there were scratches. There was overwriting.
Now, what is 100 out of 100? It is 100%. Will you buy a new car with a minor scratch? No. Will you buy a new mobile phone with a minor scratch? No. So when we say 100 out of 100, it has to be spotless, perfect paper. 24 कैरेट पेपर होना चाहिए. तो हम चाहते हैं कि हम आपको मोटिवेट करें कि वो 0.5 के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और 100 आउट ऑफ 100 अर्न करें. तो आप भी टारगेट रखिए कि पेपर में ओवर राइटिंग स्क्रैचेस होना चाहिए नहीं, परफेक्ट पेपर होना चाहिए. And that is why we have deducted 0.5. So those students are getting who are getting 99.5. For that 0.5, I want still you I still want you to put some more efforts, go something extra which will help you to score rank not only in your school, not only in your city, but at state level. And that refinement, the process of going through it, will help you lifelong. And now you have been waiting enough for winner number 1. Winner number 3 gets 3,100. Winner number 2 gets 5,100. And winner number 1 gets 7,100. And the winner is Diya Kaushal Vasa from OP Road, and her marks are phenomenal. Accounts 99, Eco 94, Statistics 99.5, OCM 95, Language 89, English 91 and Computer 92. Overall score of 94.21. All of you please congratulate Diya by writing congratulations in the comment box. Also congratulate winner number 2, winner number 3, and you congratulate yourself also for appearing for this exam, taking up this exam. You have done a great thing in your life. Now Diya ke marks you can see, she has scored phenomenal. और dear students, ऐसे marks तो सिर्फ थर्मोमीटर में ही ऐसे नंबर्स दिखते हैं, but fantastic results for winner number 1, winner number 2 and winner number 3. So a big congratulations once again from complete team of UWell, the teachers, the staff, the student fraternity, past students, everyone who are watching this. Big congratulations to Diya, big congratulations to Mansi, and big congratulations to Santosh. You all have worked wonderful, scored very well, but dear students, this is not the end. You need to excel more now. Learn from USEP and try to score more marks. So congratulations once again. Array students, don't go away. Wait. Very important announcement is coming. Diya will be getting cash prize of 7,100. Mansi will be getting cash prize of 5,100 and Santosh will be getting cash prize of 3,100. So these are the winners of USEP 2024. They will be getting cash prize and certificates. Now the game is still on. अभी तो यूसेप खत्म हुआ, उसका रिजल्ट आया है, बट आपका बोर्ड एग्जाम बाकी है. ये बच्चों ने तो 7,000, 5,000, 3,000 एज प्राइस जीत लिए, पर आपके लिए भी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. सबसे पहले, if you get 100 out of 100 in board exam, any subject which you have learned in UWell, you will get a cash prize of rupees 1,000. Next, board exam में A1 grade, which is 91% and above, we will give you cash prize of rupees 5,000.
if you are able to get 99.99 PR, and that is why student I was telling you that वो 0.5 के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, तो अगर 99.99 PR आ गया आपका तो कैश प्राइज ऑफ 11,000. गेम इज स्टिल ऑन, अभी भी अपॉर्चुनिटी है. हमने जो कहा वो सब इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो, माइंड कूल रखो ड्यूरिंग एग्जाम. दिस इज पॉसिबल. एंड द फाइनल प्राइज, इफ यू गेट 12th बोर्ड फर्स्ट रैंकर, और बोर्ड अगर आपका नाम डिक्लेयर करता है कि ये स्टूडेंट फर्स्ट है, तो वो स्टूडेंट जो यूविल का है जिसका नाम आता है एज फर्स्ट रैंकर, हुज नेम इज डिक्लेयर्ड बाय गुजरात बोर्ड, वी विल गिव यू अ 2-wheeler. Start working hard and just keep on giving your best. Now, USEP 2024, the most awaited announcement. रिजल्ट के लिए तो सर हम जानना चाहते ही थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, बट हमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट फेयरवेल में था. तो प्राइज अवार्ड सेरेमनी एंड फेयरवेल विल बी हेल्ड ऑन 28th of March. Now, this is a sample copy of the pass which you have to bring along in the farewell. Now, to get this pass, you have to bring your USEP hall ticket with a photocopy of board hall ticket. आपको दोनों लेके आना है और पास कलेक्ट करना है. We will send message to you all कि आपको कब सेंटर पे आके पासेस कलेक्ट करना रहेगा. कुछ स्टूडेंट्स ने यूसेप नहीं दिया, but they still want to be part of the farewell. No problem. What we have thought of, you give a token amount of 500 and you can collect the pass. This event we have planned at a very reputed place, that is Hotel Surya Palace. Thursday 28th March 6 p.m. onwards. So once your board is exams are over, you start preparing for your farewell. Now, dear students, thank you all for being a part of UWIL family. Board exams aa rahe hain and team UWIL wishes you best of luck for your exams. Be positive and be focused. I hope you have learned lots of things from the presentation. You have understood where now you need to keep your head and start practicing for the same, start working on your mistakes. Very soon we will be sharing the results in the community of 12th standard WhatsApp group. You have to check your seat number, search and see your marks and percentage. Your report card mail with section wise analysis will reach you in 2 days. आप सबको टीम यूविल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक. गिव योर बेस्ट, रॉक द एग्जाम्स, चक द यूविल.